AglaSem. My name is Mandira and today we are going to be studying Class 8, Chapter number 10, which is the last chapter, Law and Social Justice. So in this chapter, we are going to talk about how people directly or indirectly are involved in law and order system. हमारा एक social justice का क्या concept होता है, मतलब जो हमारा एक the gap between rich and poor जो है उसको एक gap को close करने के लिए what steps the law can take, what steps the government can take, and what steps we can take as citizens. So all these we are going to study about in this chapter. We're also going to talk about the infamous Bhopal gas tragedy, which is a very important topic and also one of the most unfortunate incidences in India. So brace yourselves. Let's start with chapter number 10, Law and Social Justice. Okay, so यहाँ पर हम थोड़ा सा शुरू करते हैं बात करनी वर्कर्स वेजेस के थ्रू. वेजेस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी, ठीक है, या जो उनको इनकम पैसे मिलते हैं एक दिन के या एक महीने के, ठीक है. सो आपने जरूर सुना होगा देयर इज अ लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस. लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस मतलब एक लिमिट से कम पैसे आप किसी को नहीं दे सकते फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग. ओके, व्हाई? बिकॉज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है और एक लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द पुअरर कैटेगरी, है ना. तो सिंस दोज पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और अगर एक ने अगर जॉब छोड़ दिया तो दूसरा आके एक मिनट में उसकी जॉब ले लेगा. दैट्स वाई ये जो एक सिचुएशन है ये जब क्रिएट होती है देन द एम्प्लॉयर स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज पीपल, है ना, कि चलो अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन लेट्स से 30 रुपीज अ डे और 40 रुपीज अ डे, बट दैट अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द वर्क दैट दे आर टेकिंग. तो इसलिए ये लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस बना है. This is basically to safeguard the rights of the laborers, to safeguard the rights of the poorer, daily workers, so that they get enough amount of money in exchange of the work that they are doing. ठीक है, and no worker or employer can exploit them just because someone else is ready to take on their job in a minute. Okay. So with the law of minimum wages, it is meant to protect workers and laws to protect interests of producers and consumers. This helps ensure that the relations between these three parties, the worker, consumer and producer, are governed in the manner that is not exploitative. ठीक है, वैसे तो उसमें लिखा है कि तीनों के ही रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, बट यूजुअली हमको पता है दैट द जो वर्कर्स होते हैं दोज आर द पीपल दैट आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड द मोस्ट, है ना. प्रोड्यूसर्स तो कम ही होता है एक्सप्लॉइट, जो वर्कर्स हैं उन्हीं के लॉज ये प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा बनाए गए हैं, ठीक है. सो मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में मैं आपको अभी बता रही थी. स्पेसिफाइज दैट द वेजेस शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफिक मिनिमम, इसीलिए, ठीक है. दे शुड बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, ये भी होना चाहिए, अलार्म्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, और एक स्पेशली अगर आप केमिकल किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या कहीं पर, तो उसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, है ना, बेसिक जो आपके अलार्म्स वगैरह ये सब होने चाहिए. क्वालिटी ऑफ गुड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के. ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए या किसी को करंट लग जाए तो उससे आग लग जाए. लॉ रिक्वायरिंग दैट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, फॉर एग्जांपल शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स, है ना. स्पेशली आप देखोगे सॉल्ट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसका प्राइस कभी भी आज भी 20-25 रुपीज किलो उतना ही चल रहा है ना. दैट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज सॉल्ट इज एन एसेंशियल कमोडिटी. ओके. लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड फैक्ट्रीज जो पोल्यूशन वगैरह करती है एनवायरमेंटल, एंड लॉज टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस, क्योंकि अगर यूनियनाइजेशन नहीं होगा तो वो अपने राइट्स के लिए वर्कर्स लड़ नहीं सकते, है ना. इट्स इंपॉर्टेंट टू यूनियनाइज. ओके, but merely making laws is not enough. The government has to ensure कि these laws are implemented. Enforcement में काफी tricky हो जाता है because enforcement becomes even more important when the law seeks to prevent the weak from the strong, है ना. Because obviously जो लोग strong हैं, people who are rich, people who are producers, they already have more control over the resources, they have more access, उनको ज्यादा education है, उनको ज्यादा channels पता है ना, bribe दे सकते हैं वो, they can afford. So the law is basically seeking to protect the weak from the strong. इसीलिए it is very important that they are enforced properly. So when workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. ये मैं आपको अभी बता रही थी कि अगर वो उनकी जो एक मिनिमम वेज से कम भी उनको पैसे मिल रहे हैं तो भी वो अग्री कर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने छोड़ दिया तो एकदम से कोई दूसरा आकर उनको रिप्लेस कर सकता है बिकॉज ऑफ द मास लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री, राइट. सो बट दिस इज नॉट अ फेयर थिंग, राइट. ये फिर भी फेयर नहीं है. So that's why the government needs to intervene and ensure that the laws are implemented properly. Okay.
Many of these laws have their basis in the fundamental rights granted by the Indian Constitution. For example, जो right against exploitation है, no one can be forced to work for low wages or under bondage. Similarly, the law lays down that no child below the age of 14 years shall be employed to work in a factory or mines and engaged in any hazardous employment. ठीक है, तो ये right against exploitation जो हमने पढ़ा था, उसी के अंदर ये सारे उसके extension में laws आते हैं. ठीक है, how are these laws played out in practice? अब हम फटाफट से उस चीज पर आते हैं. So let's move on to the most important topic of this chapter and perhaps this book. In fact, मुझे ऐसा लगता है Bhopal gas tragedy. Okay, the world's worst industrial tragedy took place in Bhopal 24 years ago. Union Carbide, an American company, had a factory in the city which produced pesticides. At midnight on 2nd December 1984, methyl isocyanate. Please remember the name of this chemical. It often shows up in the exam. Methyl isocyanate, MIC for short. A highly poisonous gas started leaking from the UC plant. Okay, so there was this company जिसका नाम था Union Carbide in Bhopal, and this incident is 24 years back in 1984. 2nd December को हुआ था ये. What happened was that there was a gas leak. A poisonous gas, that is methyl isocyanate, started leaking from the plant. And यहाँ पर एक survivor का एक account भी दिया हुआ है. About 2:30 a.m. I woke up to the sound of my baby coughing badly. In the half light, I saw that the room was filled with a white cloud. I heard people shouting, "Run, run!" Then I started coughing, with each breath seeming as if I was breathing in fire. My eyes were burning. So it was a poisonous gas, definitely. So inhalation से coughing हो रही थी और उनको अंदर तक body के damage कर रही थी. ठीक है. Within 3 days, more than 8,000 people were dead. Wow. Hundreds of thousands were maimed. Maimed मतलब उनके हाथ पैर कोई ना कोई एक बेकार हो गया. ठीक है. Most of those exposed to the poison gas came from the poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work. Among those survived, many developed serious respiratory disorders, eye problems, and other disorders. Children developed peculiar abnormalities like the girl in the photo. So you can जो हमारे ये जो poisonous gases होती हैं, they can actually, when we inhale them, they can sometimes even affect our genes. They can affect the chemical working in the brains. They can affect our development. They can affect how our organs function, and quite obviously they can affect our lungs. They can affect our respiratory system. So यही हुआ वहाँ पर. Although 8,000 people directly were dead, but more than 50,000 people were impacted by it. ठीक है. So much before this disaster, there had been incidents of gas leak and a worker killing a worker and injuring several. Despite the overwhelming evidence pointing UC as responsible, it refused to accept responsibility. Or in the ensuing legal battle, the government represented the victims in a civil case against UC, $3 billion for compensation in 1985, but it accepted only $470 million in 1989. Survivors appealed against the settlement. Supreme Court ruled that the settlement amount would stand. UC stopped its operations, but left behind tons of toxic chemicals. They have seeped through the ground, contaminating water. And Dow Chemical, the company who owns the plant, refuses to take responsibility to clean up. Okay? 24 years later, people are still fighting for justice, for safe drinking water, for healthcare facilities, and job for the people poisoned by the UC. They also demanded that Anderson, the UC chairman who faced criminal charges, be prosecuted. So we read about one of the worst tragedies to have happened in India, which was the leak of this gas. Or up tak wahan, as you have read, people are still struggling to find jobs. They are still struggling to make ends meet. और even हमारे pollution को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, water pollution, और उन्होंने पूरे streams and lakes and rivers को भी chemicals ने damage कर दिया है. But the private company, American company, refuses to accept any kind of responsibility. Okay. So अब आते हैं हम next topic पे, what is a worker's worth. Now we will study these three headings in light of the Bhopal gas tragedy. So one of the reasons why foreign companies came to India is for cheap labor. अब आप देखो USA में इतना cheap labor नहीं है. India में again because abundantly हमारा employment बहुत कम है, unemployment बहुत बढ़ा हुआ है. A large section of the society is poor. That's why it's very easy to find cheap labor in India. So a lot of foreign investment comes in here. Foreign companies आती हैं in hunt of cheap labor. और वो क्या करते हैं, cost cut करते हैं, क्योंकि उनका main जो aim है वो that is to earn profit. और cost cutting में वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए. For example,
सेफ्टी डिवाइस मैलफंक्शनिंग थी इवन भोपाल गैस ट्रेजेडी में, है ना. द वर्कर क्रू फॉर MIC प्लांट वाज कट फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स. द पीरियड ऑफ द सेफ्टी ट्रेनिंग वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम टू 6 months फ्रॉम 15 days. तो 6 months की उनको सेफ्टी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी बिफोर वर्किंग इन द प्लांट, बट इट वाज कट डाउन टू 15 days बिकॉज दे सिंपली डिडंट केयर अबाउट द वर्कर्स हु वर वर्किंग देयर, ना. कि अगर छोड़ो ये तो भाई चीप लेबर है एकदम, यू नो, ऐसे ही किसी भी सब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे काम कर लेंगे, सो वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट देयर सेफ्टी. दैट्स व्हाट दैट अमेरिकन कंपनी थॉट. ठीक है, आप देखो यहाँ पर एट वेस्ट वर्जीनिया कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स वर इन प्लेस वेयर द यूसी प्लांट भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल गेजेस एंड ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट द गैस लीक्स. अब अगर कंप्यूटर गैस लीक डिटेक्ट करेगा और वो यू नो हॉन्क करने लगेगा, वार्निंग देने लग जाएगा, तो लोग भाग जाएंगे. लेकिन यहाँ पर क्या था, अनलेस समवन एक्चुअली इनहेल्ड द गैस एंड स्टार्टेड कॉफिंग एंड कंप्लेनिंग, जब तक बहुत सारे लोग कंप्लेन नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं चला दैट द गैस लीक्ड. ओके, सॉरी. ओके, at the West Virginia plant, emergency evacuation plans were in place but non-existential in Bhopal. कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन नहीं था. जैसे आप कभी अगर आपने फ्लाइट ट्रैवल किया तो उसमें दिखाते हैं ना कि दिस इज द पाथ, अगर आग लग जाए या कुछ हो जाए तो आप वहां से इमरजेंसी में इवैक्यूएट कर सकते हो, खाली कर सकते हो. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था. ओके, one part. Okay, so why are there such sharp differences in the safety standard across countries? Same अगर कंपनी यूएस में फंक्शन कर रही है तो एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, यहाँ पे एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, सिंपली बिकॉज मैंने आपको बताया दे थिंक दैट चीप लेबर है, हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करने की, इतनी सेफ्टी मेजर्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है. ये लोग तो एक कम पैसे में भी हमारे से काम कर ही लेंगे हमारे साथ. दैट्स व्हाई. ठीक है, परसीव्ड वर्थ ऑफ द इंडियन वर्कर. one worker can easily replace another, so they are like कि अगर आपको सेफ्टी मेजर से प्रॉब्लम है या वेजेस से प्रॉब्लम है तो आप जाओ, हम किसी और को हायर कर लेंगे. एंड बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड एंड विलिंग टू टेक अप ईच अदर्स जॉब, दैट्स द थिंग दैट दे टेक एडवांटेज ऑफ, एंड दैट्स व्हाई हमारे जितने भी ये कंपनीज हैं वो एक सब स्टैंडर्ड मेजर पे इंडियन वर्कर्स को ट्रीट करते हैं. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट हेडिंग इज दैट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज. फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि what was the government doing when there were blatant violations of such safety. अब ये तो हमें समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनी तो चलो evil है, उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो यू नो दैट विल नॉट केयर अबाउट द इंडियन वर्कर्स. बट व्हाट अबाउट आवर ओन गवर्नमेंट हु यू नो द गवर्नमेंट विच अलाउड कि चलो ये सब हो जाएगा. कैसे, क्या प्रॉब्लम हुई? नंबर वन, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया. सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड. पहली बात तो ऐसा कोई वर्कर्स की सेफ्टी के लिए इतने अच्छे लॉज ही नहीं बनाए हुए थे, और जो थोड़े बहुत थे they were not getting enforced. Okay, the government officials refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in the populated locality. All these sort of chemical factories अगर आप देखो, they are rarely in residential areas, क्योंकि exactly because of this कि अगर कोई गैस लीक हो गया then the whole city will be affected ना. तो they are I mean आप कभी शुगर मिल्स तक देखोगे तो वो एक you know दूर के लोकेशन, आइसोलेटेड लोकेशन में होते हैं. बट यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री को बिल्कुल सिटी के अंदर अलाउ कर दिया बिकॉज यू नो द गवर्नमेंट थॉट कि अगर हमने इस प्लांट की इन्वेस्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया, उनको मना कर दिया कि यहाँ पे प्लांट मत लगाओ, दैट वुड कॉज मास अनएम्प्लॉयमेंट और इतना सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए चला जाएगा. दैट्स व्हाई दे अलाउड इट. This, as you know, is contrary to the role of what you know they should be doing. ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वेस्टमेंट चला जाता तो एम्प्लॉयमेंट, अरे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है. It is not the duty of the foreign companies to come and provide employment, especially when they are trying to harm, you know, our citizens and trying to treat them as low worth citizens. ऐसा कुछ नहीं है. So that is definitely the fault of the government. Okay, next topic, new laws to protect the environment. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी क्या हुआ, इतना सारा केमिकल उनके स्ट्रीम्स में चला गया जो आज तक वो बेचारे क्लीन कर रहे हैं, एंड इट पोल्यूटेड आवर वाटर रियली सीवियरली. सो ये वाले लॉज भी गवर्नमेंट ने सोचा चलो अब बनाते हैं, वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए तो बने ही है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी बनाएंगे. द एनवायरमेंट वाज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, चाहे वो रिवर्स हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो. बट अब जब ये बात हो गई आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स ने जब प्रेशर किया तो द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज. So polluter was to be held accountable for the damage done by the environment to the environment. The environment is something that people over generations will share. It could not be destroyed merely for industrial development. This epiphany happened to the Indian government, which is great. अब हम एक केस के बारे में पढ़ते हैं. सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Supreme Court held the right to life is a fundamental right and includes the right to enjoyment of pollution-free water and air full of enjoyment. For full enjoyment of life. तो एक जो हमारा क्लीन एयर और वाटर का एक्सेस है
वो भी हमारे एक राइट टू लाइफ में ही आता है कभी, बिकॉज आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दिस मोर देन एनीवन एल्स बिकॉज आई स्टे इन दिल्ली एंड हाफ द टाइम, आई मीन until this lockdown we were always afflicted by high levels of pollution and in the air. तो आप कभी देखोगे तो मेरे घर के आसपास भी ना there are trucks, I think उनमें कोई chemical होता है या पता नहीं water होता है, they are spraying water around जिससे pollution levels कम होते हैं, and those are I think done by the Delhi government. It's a great initiative. So again this clearly suggests कि एक environment जो हमको एक pollution free environment है वो एक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने जरूर सुना होगा दैट वी आल्सो हैड ऑड इवन schemes in here जहाँ पे एक दिन odd number की गाड़ियाँ could go out and even number की एक दिन. I think that also greatly reduced pollution. So all these sensible measures are supposed to be taken by the state or the central government in order to ensure that all the citizens of the state have access to clean air and pollution free air. So this is an example of how even now the government is protecting us from pollution and other things. Okay, environmental damage. Okay, so this was the last chapter of the book. I really hope that you understood this chapter. Minimum Wages Act, how all the cycle of workers and ये जो हमारा producers का cycle है, how this works, the Bhopal gas tragedy, and why the workers' worth is less in India, and how the new laws have tried to sort of restore their worth back. If you have any questions, please feel free to comment them down, and do subscribe to the channel. Thank you for listening.